Welcome to SNS Academy. I am Satran Saha. You are welcome to SNS Academy. Today we have to discuss about Indian polity by M. Laxmikanth. Part 2 System of Government. पार्ट 1 का सब सारे टॉपिक अपलोड किया गया है. वहाँ पर 12 टॉपिक था. किस तरह मतलब यूनियन टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस थिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस थिंग्स नरेटेड देयर. ये सब चीज बताया गया है. अगर आप नहीं देखे हैं, नए हैं, तो उसको देख सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का बारे में दिया गया है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम. दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, जैसा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. The Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at the center and in the states. Article 74 and 75 deal with the parliamentary system at the center and Articles 163 and 64 in states. यहाँ पर ये याद रखना होगा, जो सेंटर में कौन सा आर्टिकल फॉलो होता है, 73 and 74 and 75. 74 and 75, these articles followed for central parliament, and article 163 and 164 ये फॉलो होता है स्टेट्स के लिए. Modern democratic governments are classified into parliamentary and presidential on the basis of the nature of relations between the executive and the legislative organs of the government. The parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts. The presidential system of government, on the other hand, is one in which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is constitutionally independent of the legislature with respect of its term of office. तो यहाँ पर दिया गया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रहता है. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओवरलैपिंग होता है. लेजिस्लेचर से जो मेजॉरिटी पार्टी रहता है, उससे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है. प्राइम मिनिस्टर चुनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहीं पर से चुना जाता है. अगर कोई मिनिस्टर हो गया, वो मेंबर नहीं है, तो 6 महीना का अंदर उसको मेंबर होना पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन देना पड़ेगा. लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरा सेपरेट है. Executive not responsible to the legislature. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में फॉलो होता है, और यूएसए, रसिया, यही सब में फॉलो होता है. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में फॉलो होता है. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो नॉन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट and is prevalent in Britain, Japan, Canada and India among others. The presidential government, on the other hand, is also known as non-responsible or non-parliamentary or fixed executive system of government
and is prevalent in USA, Brazil, Russia and श्रीलंका among others. तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया में फॉलो होता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को हम लोग नॉन रेस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम गवर्नमेंट बोला जाता है और ये यूएसए, ब्राज़ील, रसिया, श्रीलंका में फॉलो होता है। Ivor Jennings called the parliamentary system as cabinet system because the cabinet is the nucleus of power in parliamentary system. The parliamentary government is also known as responsible government. As the cabinet, the real executive is accountable to the parliament and stays in office so long as it enjoys the latter's confidence. It is described as Westminster model of government after the location of the British Parliament, where the parliamentary system originated. तो यहाँ पर आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक कैबिनेट सिस्टम है जो कि कैबिनेट न्यूक्लियस पावर है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है यही क्योंकि वो लेजिस्लेचर से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेज और लोग रहते हैं जितना तक उन लोगों का मेजॉरिटी रहता है। इट इज डिस्क्राइब्ड वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये फॉलो होता है, इसीलिए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोला जाता है गवर्नमेंट। In the past, the British constitutional and political experts described the Prime Minister as a primus inter pares in relation to the cabinet. In recent period, the Prime Minister's power, influence and position have increased significantly. Vice versa, the cabinet. She has come to play a dominant role in the British political administrative system. Hence, the later political analyst like Crossman, Mackintosh and others have described the British system of government as prime ministerial government. The same description holds good in the Indian context too. यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड रहते हैं। नॉमिनल हेड कौन है? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर्स क्या है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उसको डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव, while the kitchen cabinet, it is the only an advisory body and consists of non-elected departmental secretaries. They are selected and appointed by him or her, are responsible only to him, her and can be removed by him, her any time. तो यहाँ पर दो एग्जीक्यूटिव रहते हैं जो इसे बोला गया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। उसका नाम से एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है, लेकिन रियल पावर रहता है कैबिनेट मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, और कैबिनेट क्या है ना, एडवाइजरी बॉडी रहता है एंड कॉन्सिस्ट्स ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। उसका बाद उन लोगों का अंडर में सेक्रेटरी रहते हैं। दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, आर रेस्पॉन्सिबल टू हिम, ही एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम और हर एनी टाइम। तो द प्रेसिडेंट एंड हिज हर सेक्रेटरीज are not responsible to the Congress
for their acts. They neither possess membership in the Congress nor attend its sessions. The President cannot dissolve the House of Representatives, the lower house of the Congress. Lower house of the Congress, the doctrines of separation and the doctrines of separation of powers is the basis of the American presidential system. The legislative, executive, and judicial powers of the government are separated and vested in the three independent organs of the government. जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये सब अलग अलग रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है. और मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या मेरिट्स रहता है? हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट एंश्योर हार्मोनियस रिलेशनशिप and cooperation between the legislature and executive organs of the government. The executive is part of the legislature and both are interdependent at work. As a result, there is less scope for dispute and conflicts between the two organs. जिस तरह मिनिस्टर पार्लियामेंट्री में रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं, इसीलिए उन लोगों का रिलेशन ठीक रहता है. एग्जीक्यूटिव बॉडी का रिलेशन लेजिस्लेचर के साथ अच्छा रहता है. डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होने खूब कम होता है. उसका बाद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. बाय इट इज वेरी नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश्ड ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. The ministers are responsible to the parliament for all their acts of omission and commission. The parliament exercises control over the ministers through various devices like question hour, discussion, adjournment motion, no confidence motion, etc. Ministers responsible रहता है लेजिस्लेचर पर, और लेजिस्लेचर इन लोगों को कंट्रोल करते हैं क्वेश्चन आवर के थ्रू से, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू से और डिस्कशन के थ्रू से. प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म. अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट ए सिंगल पर्सन. द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can be removed by a no confidence motion. यहाँ पर मेजोरिटी का साथ गवर्नमेंट चलता है, इसलिए मिनिस्टर्स का पावर लिमिटेशन रहता है, और उन लोगों का ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हुआ तो अब उन लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा. इसलिए वो लोग रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. इन केस द रूलिंग पार्टी लॉसेस इट्स मेजोरिटी, द हेड ऑफ द स्टेट कैन इन्वाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस मीन्स एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट fresh elections. Hence, Dr. Jennings says the leader of the opposition is the alternative prime minister. अगर लेजिस्लेचर डिजल्व हो जाता है तो यहाँ पर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या करता है ना, वो अपोजिशन पार्टी को, लीडर को बुलाता है. अपोजिशन पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. Wide representation. In parliamentary system, the executive consists of a group of individuals. Ministers who are representatives of the people, hence it is possible to provide
representation to all sections and regions in the government. The Prime Minister, while selecting his or ministers, can take the factors into consideration. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लिस्ट बड़ा रहता है, उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं और वो लोग प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं. डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिमेरिट्स क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट. देयर इज नो गारंटी दैट ए गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर. The ministers depend on the mercy of the majority legislature for their continuity and survival in office. A no confidence motion or political defection or evils of multi-party coalition can make the government unstable. The government headed by Moraji Desai, Charan Singh, VP Singh, Chandrasekhar, Devgowda and I.K. Gujral are some such examples. तो कभी कभी यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाता है. गवर्नमेंट स्टेबल होने के लिए मेजॉरिटी का ज़रूरत पड़ता है. मेजॉरिटी नहीं होने से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन से पास होने का बाद मिनिस्टर सबको रिजाइन देना पड़ता है. जैसा गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये सब एग्जाम्पल दिया गया है. नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट conductive for the formulation and implementation of long-term policies. This is due to uncertainty of the tenure of the government. A change in the ruling party is usually followed by change in the prime minister, the real executive, de facto executive. Thus, the president is head of the state while the prime minister is head of the government. Article 74 provides for a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise of his or her functions. The advice so tendered is binding on the president. तो पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है. अनसर्टेनिटी अगर टेन्योर हुआ और फुल टर्म तक अगर कंटिन्यूटी नहीं हुआ तो यहाँ पर पॉलिसी सब रन नहीं हो पाता है. Majority party rule. The political party which secures majority seats in the Lok Sabha forms the government. The leader of the party is appointed as the prime minister by the president. Other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. However, when no single party gets the majority, a coalition party may be invited by the president to form the government. यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी ही रूल करता है और अगर मेजॉरिटी नहीं मिला तो कोलाइशन गवर्नमेंट आता है और मेजॉरिटी पार्टी लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, प्राइम मिनिस्टर, और उसका प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस से मिनिस्टर सब चूज किया जाता है. Collective responsibility. This is the bedrock principle of parliamentary government. The ministers are collectively responsible to the parliament in general and to the Lok Sabha in particular. They act as a team and swim and sink together. The principle of collective responsibility implies that the Lok Sabha can remove the ministry, council of ministers headed by the prime minister from office by passing a vote of no confidence. वहाँ पर सभी मिनिस्टर का रेस्पॉन्सिबल रहता है. सभी मिनिस्टर लोकसभा में रेस्पॉन्सिबल है. उन लोग का क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा
और रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, और मेजॉरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज दे मे बी रिजाइन. Political homogeneity. Usually members of the Council of Ministers belong to the same political party and hence they share the same political ideology. In case of coalition government, the ministers are bound by consensus. तो जो रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी सेम रहता है क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है. Double membership. The ministers are members of both the legislature and the executive. This means that a person cannot be a minister without being a member of the parliament. The constitution stipulates that a minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister. जो मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में मेंबर होता है. अगर मिनिस्टर एक मेंबर नहीं हुआ है तो उसको 6 महीना में मेंबर होना पड़ता है, इसीलिए उसका डबल मेंबरशिप रहता है. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ही सी इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर. In these capacities, he plays a significant and highly crucial role in the functioning of the government. जो प्राइम मिनिस्टर ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लीडिंग रोल निभाते हैं और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होते हैं, पार्लियामेंट में वो लीडर हैं. उसका कैपेसिटीज, उसका क्रेडिट पर गवर्नमेंट फंक्शन करता है. डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इन अदर वर्ड्स, द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी of its term and hold fresh elections. This means that the executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. अगर प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को तो लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है और फ्रेश इलेक्शन होता है. Secrecy. The ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceeding, policies and decisions. They take the oath of secrecy before entering their office. The oath of secrecy to the ministers is administered by the president. यहाँ पर ministers ऑपरेट करते हैं और सीक्रेसी मेंटेन करते हैं जो कि बाहर में एक्सपोज होना नहीं चाहिए. फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द फीचर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज. अमेरिकन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन का बाद और इलेक्टोरल कॉलेज का कुछ वैल्यू नहीं रहता है. उसका बाद प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर का साथ भी डिपेंडेंट नहीं रहता है. The American president is both the head of the state and the head of the government. As the head of state, she occupies a ceremonial position. As the head of government, she leads the executive organ of government. American president को दो टाइप का वैल्यू दिया जाता है. एक तो जब वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब सेरेमोनियल हेड है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को लीड करते हैं.
The president is elected by an electoral college for a fixed tenure of 4 years. He cannot be removed by the Congress except by impeachment for a grave unconstitutional act. वो इलेक्टोरल कॉलेज से सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने के बाद वो मेंटेन करते हैं, उसका सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इम्पीचमेंट किया जा सकता है. द प्रेसिडेंट गवर्न्स with the help of a cabinet or smaller body called policies of the government. For example, the Janata government headed by Moraji Desai in 1977 reserved a large number of policies of the previous Congress government. The same was repeated by the Congress government after it came back to power 1980. थोड़ा पेज गड़बड़ हो गया है. Dictatorship of the cabinet. When the ruling party enjoys absolute majority in the parliament, the cabinet becomes autocratic and exercises nearly unlimited powers. H.J. Lasky says the parliamentary system gives the executive an opportunity for tyranny. रामसे मोयर द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का दिया गया है. This phenomena was witnessed during the era of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. Against separation of powers in the parliamentary system, the legislature and the executive are together and inseparable. The cabinet acts as the leader of legislature as well as the executive. As Begert points out, the cabinet is a hyphen that joins the buckle that binds the executive and legislative department together. Hence, the whole system of government goes against the letter and spirit of the theory of separation of power. In fact, there is a fusion of powers. Parliamentary system में the legislature executive दो ठो टुगेदर काम करते हैं और inseparable है. Government by amateurs. The parliamentary system is not conducive to administrative efficiency as the ministers are not experts in their fields. The Prime Minister has a limited choice in the selection of ministers. Prime Minister ही चूज करता है. Her choice is restricted to the members of parliament alone and does not extend to external talent. Moreover, the ministers devote most of their time to parliamentary work, cabinet meetings and party activities. The comparison of the parliamentary and presidential system in terms of their features. उसका बाद reasons for adopting parliamentary system. A play was made in favor of the US presidential system government in the Constituent Assembly, but the founding fathers preferred the British parliamentary system due to following reasons. Familiarity with the system. The constitution makers were somewhat reasons for adopting parliamentary system. हम लोग क्यों parliamentary system adopt किए? Familiarity with the system. The constitution makers were somewhat familiar with the parliamentary system as it had been in operation in India during the British rule. K. M. Munshi argued that for the last 30
or 40 years, some kind of responsibility has been introduced in the governance of the country. Our constitutional traditions have become parliamentary after the experience. Why should we go back and buy a novel experience? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर थे, वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस थे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का साथ, इसीलिए वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रीफर किए. Preference to more responsibility. Dr. B.R. Ambedkar pointed out in the Constituent Assembly that a democratic executive must satisfy two conditions: stability and responsibility. Unfortunately, it has not been possible so far to devise a system which can ensure both in equal degree. The American system gives more stability but less responsibility. The British system, on the other hand, gives more responsibility but less stability. The draft constitution, in recommending the parliamentary system of executive, has preferred more responsibility to more stability. और वो लोग प्रीफर किए जो कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेस्पॉन्सिबल रहता है, जिस तरह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ओवरलैपिंग रहता है. एग्जीक्यूटिव बॉडी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा. नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स between the legislature and the executive which are bound to occur in the presidential system prevalent in USA. They thought that an infant democracy could not afford to take the risk of perpetual cleavage, fed or conflict or threatened conflict. These two organs of the government, they wanted a form of government they would be conducive to manifold development of the country. जो कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इंटर रिलेटेड रहते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं रहता है. नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स एंड मोस्ट complex plural societies in the world. Hence, the constitution makers adopted the parliamentary system as it offers greater scope for giving representation to various sections, interests, and regions in the government. This promotes a national spirit among the people and builds a united India. जो कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे आइडियोलॉजी का पीपल रहते हैं, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करता है. वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड और शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बीन ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट in our country since the 1970s. This matter was considered in detail by the Swarna Singh Committee appointed by the Congress government in 1975. The committee opined that the parliamentary system has been doing well and hence there is no need to replace it by the presidential system. जो कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के चलते एक डिबेट हुआ था, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी किए थे, लेकिन उन लोगों का डिस्कशन के बाद देखा गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा लाभवान है और इसका बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो लोग रिप्लेस करने के लिए सजेस्ट नहीं किए. Distinction between Indian and British models. The parliamentary system of government in India is largely based on the British parliamentary system. However, it never becomes a replica of the British system and differs in the following respect. जो भी ब्रिटिश और इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
लेकिन इंडिया अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, फिर भी कुछ डिफरेंस है। जहाँ पर इंग्लैंड में मोनार्च है, इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं है। India has a republican system in place of the British monarchical system. In other words, the head of the state in India, that is president, is elected, while the head of the state in Britain is king, queen, enjoys a hereditary position. वहाँ पर hereditary position follow होता है. The British system is based on the doctrine of sovereignty of parliament, while the parliament is not supreme in India and enjoys limited and restricted powers due to written constitution, federal system, judicial review and fundamental rights. ब्रिटिश सिस्टम में जो भी क्या अमेंडमेंट प्रोसीजर इजी है, while in India it is not so easy or not so difficult, partly rigid and partly flexible. और फिर यहाँ पर रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है. रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स. In Britain, the Prime Minister should be a member of lower house, House of Commons of the Parliament. In India, the Prime Minister may be a member of any of the two houses of Parliament. दो houses का Parliament का हो सकते हैं. Usually, the members of Parliament alone are appointed as ministers. In Britain, in India, a person who is not a member of Parliament can also be appointed as a minister, बट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. अगर वो हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन 6 मंथ के लिए. ब्रिटेन हैज ए सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, while India has no such system. Unlike in Britain, the ministers in India are not required to countersign the official acts of the head of the state. Shadow cabinet is a unique institution of the British cabinet system. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its members for future ministerial office. There is no such institution in India. इंडिया में शैडो कैबिनेट नहीं है जो कि ब्रिटेन में है, और ये फॉर्म होता है ऑपोजिशन पार्टी बैलेंस करने के लिए रूलिंग कैबिनेट and to prepare its members for future ministerial office. These things discussed in this topic, I hope you understood well. Like, share and comment this video. Thank you.